So question 20th, exercise 7.5. Integration of dx over x is to x raised to power 4 minus 1 is to dx, which is same as that of question number 16. हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया तो उसमें क्या था, x रेस्ट पर n था, तो मैंने x की पावर n को एक कम करके दैट मींस x रेस्ट पर n माइनस वन से ऊपर मल्टीप्लाई किया, x रेस्ट पर n माइनस वन से नीचे मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे मेरे पास x की पावर 4 है, नीचे मैक्सिमम पावर, तो इसको एक कम कर दिया तो मेरे पास बनी x रेस्ट पर क्यूब। सो आई डिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ x क्यूब इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आपको ये याद रखना है। तो ये बन गया मेरे पास x क्यूब इज टू डी एक्स अपॉन x4 is to x4 minus 1 is to dx. So now I can do substitution. X4 is equal to t. This is 4x cube dx is equal to dt. X cube dx, this is dt upon 4. So which is x cube, this is dt upon 4. X4, this is t, is to t minus 1. So which is 1 by 4 outside, integration of dt upon t is to t minus 1, which is 1 by 4 is to I1, let it be number 1. Now I will solve I1 separately. I1, which is equal to 1 upon t is to t minus 1, which can be equal to a upon t plus b upon t minus 1. So 1 is equal to a is to t minus 1 plus bt. 1 is equal to a plus b is to t minus a plus b equal to 0 and a equal to minus 1. If a is equal to minus 1, b is equal to 1. Put the value of a and b in number 2. This is 1 upon t is to t minus 1, which is I1, which is a minus 1 upon t plus b, which is log t minus 1 minus log t plus c. Substitute the value of t. This is log x4 minus 1 minus log x4 plus c. This is I1. So put it in number 1, which is equal to 1 by 4 I1. 1 by 4 is to log x4 minus 1 upon x4 plus c. This is the final answer. So both the questions आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा. If there is a linear multiply by the polynomial, ये देखिए आपके पास नीचे क्या है, नीचे आपके पास here you have a linear multiply by the polynomial. This is polynomial. So see the degree of the polynomial, reduce it by 1, multiply in numerator and denominator, and proceed as a normal way with the help of substitution. This is the method to solve this question. इसको note करिए. Then we'll move to question number 18.
After that, we will do question 18. This is again a different type of question, because there are certain questions, question number 10, question number 12 that we have discussed, question number 16 we have discussed, question number 20th, question number 18, maybe question number 17. So these questions are very important. They can be asked in the paper because they were the part of the paper so many times. So for that reason, these are very important. As soon as you will note, please tell me. Noted, sir. Can I start with the next question? Yes, sir. Question 18. Integration of x square plus 1, x square plus 2, x square plus 3, x square plus 4 dx. No, sir. So what I will do, I will take this expression out of integration first. Put x square as a t, because this is out from integration, so there is no need to take the value of dt and dx. So it will be t plus 1, t plus 2, t plus 3, and t plus 4. Now the degree of numerator and denominator is same, so partial fraction cannot be applied. So what I have to do, I have to go with the long division method. So this is t square plus 2t plus t, 3t plus 2. This is t square, 4t plus 3t, 7t plus 12. So t square plus 3t plus 2, t square plus 7t plus 12. It is 1, t square plus 7t plus 12. So it goes, it is minus
it is minus, so this is equal to t square plus 70 plus 12 is to 1 minus 4t plus 10 upon t plus 3 is to t plus 4. This is now the expression which we now I can write it as, which is equal to t square plus 70 plus 12 upon t plus 3 t plus 4 minus 4t plus 10 upon t plus 3 t plus 4. So which is, it goes, so this is 1 minus 4t plus 10 upon t plus 3 is to t minus 4, t plus 4. अब इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको I1 ले रहा हूँ. So let it be 1 minus I1, let it be number 1. So I'm going to solve I1, which is 4t plus 10 upon t plus 3 a upon b upon so this is a is to t plus 4, b is to t plus 3. So a plus b is to t, 4a plus 3b. Forty plus 10. So a plus b equal to 4, 4a plus 3b equal to 10. So the value of a is b minus 4. So this is 4 is to 4, 16 minus 4b plus 3b equal to 10. So 16 minus b is equal to 10. B is equal to 6. So a is equal to minus 2. Put the value of a and b in number 2. A and b in number 2. तो ये आ गया a. The a is minus 2 upon t plus 3 and the b is 6 upon t plus 4. Now this is I1. Substitute in number 1. Put I1 in 1. अभी मैं कहीं भी इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं, देख लीजिए. तो ये मेरे पास किसके बराबर हो गया? दिस इज इक्वल टू 1 minus I1. I1 is this. So this will be plus 2 upon t plus 3 minus 6 upon t plus 4. तो ये मेरे पास ये वैल्यू आई. ये किसको सॉल्व करके आया? इसको सॉल्व करके आया t plus 1. तो इसको मतलब क्या हुआ मेरा? ध्यान देना. Which is equal to, which implies my t plus 1 t plus 2 upon t plus 3 t plus 4. This is 1 plus 2 upon t plus 3 minus 6 upon t plus 4. Now I want to integrate. Before integration, I have to reconvert it into x. So I have taken the value of x square as a t. So this is x square plus 1, x square plus 2, 1 plus 2 upon
x square plus 3 minus 6 upon x square plus 4. Now integrate. This is integration, this is integration, this is integration, this is integration. So integration of this is x is to dx is to dx. So integration of this is x square plus a square. So this is 2 is to 1 over a tan inverse x over a, x upon under root 3 plus 1 over a, that means 1 over 2 tan inverse x upon 2. So which is equal to x plus under root 2 tan inverse x upon under root 3 plus 1 by 2 tan inverse x upon 2 plus c. This is my final answer. So इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमने किया, whatever we have done, this is out of integration to make our question suitable for partial fraction. Once I have converted the entire question into the suitable values, I did integration. यहाँ पे मेरी suitable values बनी, मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया x के अंदर t को, तो उसके बाद मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया. लेकिन यहाँ पे मैंने क्या था, इनिशियल सब्स्टिट्यूशन मैंने t की फॉर्म में करके ये सारे का सारा क्वेश्चन t की फॉर्म में चलाया, लेकिन इंटीग्रेशन कहीं नहीं की, उसको सिर्फ सॉल्व किया. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द एंटायर पार्शियल फ्रैक्शन इज इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन. इसमें बेटा किसी को कोई डाउट तो बता दीजिए. कोई डाउट किसी ने कोई डिस्कस करना हो, प्लीज टेल मी. सर कल के टेस्ट में चैप्टर 5 आ रहा है ना सिर्फ. हाँ, डिफरेंशिएशन का टेस्ट है एंड द टेस्ट विल बी आई विल शेयर विद यू पीपल ऑन व्हाट्सएप. तो कितने बजे टेस्ट है कल? इवनिंग शिफ्ट में है या मॉर्निंग में है? सर 12 to 12:30 है. हाँ, तो 12 बजे मैं आपका टेस्ट जो है वो आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, आपके ग्रुप में शेयर हो ठीक है. जाएगा. ठीक है, तो उसकी ऑप्शंस को टिक करने के बाद आप मेरे को मेल करोगे, बिकॉज पोर्टल पे टेस्ट वो शेड्यूल नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम है पोर्टल पे टाइपिंग मैथ्स की, तो इसलिए तो देन यू कैन send your options to me on my official email ID. तो वहाँ मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँगा. आगे चलें. इफ यू हैव नोटेड, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई.
Yes, sir. चलिए यस सर। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 21 भी एक बार देख लें, बिकॉज अब नया चैप्टर तो नया टॉपिक तो मैं फिर मंडे को ही शुरू करूंगा। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन e raised per x minus 1. Now see, so here put e raised per x as a t. So e raised per x dx, this is equal to dt. So dx is equal to dt upon e raised per x, which implies dx is equal to dt upon e raised per x is t. So this is t. So which implies my question will be the value of dx will be dt upon t is to t minus 1. तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ समझने की जरूरत है. I have reconverted it dx into dt over t. I have substituted the value of dx, then I have substituted the value of e raised per x minus 1. So t minus 1. So now you can easily solve this question for partial fraction. So 1 over t is to t minus 1. This is a upon t plus b upon t minus 1. So 1 is equal to a is to t minus 1 plus b is to t. So this is a plus b is to t minus a. So a equal to minus 1 and b equal to 1. Substitute the values in number 1. So 1 over t is to t minus 1 will be equal to minus 1 upon t plus 1 upon t minus 1. Now first substitute the value of t, then integrate. So e raised per x minus 1, which is equal to minus 1 upon e raised per x plus sorry, I did a wrong thing. First integrate, because we have already substituted the value of dx. First integrate, then substitute the value of t. This is log t minus 1 minus log t plus c, which is equal to log t minus 1 upon t plus c, which is equal to log e raised per x minus 1 e raised per x plus c. This is the final answer. तो इसको anything else to any student in this topic of partial fraction, or any questions before that, before exercise 7.5, any doubt to any student? Because as soon as we will finish with the indefinite integral, then I will start linear programming, then we will continue with the definite integral. Doubt before exercise 7.5 or from 7.5 also? But disconnect हो गया वो. I think there is some problem with net. तो वो आप पे रेज हो गया. चलिए कोई नहीं, आप उसको खुद कर सकते हैं, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है. तो any doubt to any student? No, sir. परफेक्ट. तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक्स और हैं बेटा. द फर्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सेकेंडली
some special integration, special formulas for integration. स्पेशल फॉर्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और दूसरा स्पेशल फॉर्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन। तो ये दोनों ही हमको डिस्कस करनी है, क्लियर अभी करनी है। तो चलिए, वो जो एक लिमिट एज अ सम है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, वो डेफिनेट इंटीग्रल में है तो वो हम उसको नहीं करेंगे। एलपी इज कंप्लीटली द पार्ट ऑफ द कोर्स, तो उसको एक बार हम जरूर करना है पूरे का पूरा। तो when LP will be finished, linear programming will be finished, your course will be finished. But we'll continue with the course of the second term till 15th. From 15th of September, your revision will start. Rigorous revisions will start. But as the classes are going to start, तो फिर क्लास में मैं MCQs के टेस्ट वगैरह आपके लेता रहूँगा, वो आपके क्लासेस के अंदर चलते रहेंगे। And in October there will be 2 pre-boards for term 1. आपके 2 pre-boards होंगे अक्टूबर के अंदर term 1 सिलेबस के, because your term 1 will start in November. So there will be 2 pre-boards for term 1. So अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर लो। मैंने आपको एक रफ सा कोर्स ऑफ एक्शन बता दिया है। सो किसी की कोई क्वेरी इसके रिगार्डिंग? Okay, thank you very much. Thank you.